I'm actually moving in the east direction. Now, many of you would like to see that the sun is here, so I'm moving in northeast direction. No, please understand. It appears to be in the northeast, but it is by and large east. Sun's distance is millions of kilometers from Earth. So it is actually almost east only. And when you are moving the evening hours towards the sun, it is west. Students, morning mein shadow will be on the west side, and evening mein shadow will fall on the east side. Then it is also important that you are able to distinguish between left and right. You are able to distinguish between left and right. For example, if I am moving in the north direction, students, then my left is in the west. This is left. And my right is in the east. Now this looks very obvious, but please understand one thing. Suppose I am moving towards the south. Then my right is now west. This is my right. So you should be able to visualize, and this is my left. So it will all change. It is all dependent on which direction I am facing, which direction I am moving. So left and right is one concept. East, west, north, south is the other concept. Anything more than 10 degree will be considered northeast up to 80 degree. Something almost closer to 90 degree is north. Now, when we move, it is the concept of rectangle. So if I move north, then I move east, it is always 90 degree. Then if I move south, it is 90 degree. Please understand these two sides are going to be equal because rectangle opposite sides are equal. So the concept of rectangle and the concept of triangle will also be used. In case of triangle, we use Pythagoras theorem. Suppose I say that from the point of origin, Rahul moves 80 meters towards east, and then he takes a left and walks 60 meters. Suppose. So what is the distance from the final point with the original point? Okay. Now this is 90 degrees, so this will become hypotenuse square will become equal to base square plus perpendicular square. Always remember this. This distance A to E is base and E to finally O is perpendicular. So we can always find out the smallest distance as under root of base square plus perpendicular square. So the concept of triangle or Pythagoras theorem might also be required in this particular topic. Then students, we got a lot of other basic concepts. Please understand the complete rotation is 360 degrees. Complete rotation. For example, if I say we are moving 270 degree, I am facing east. And we move 270 degree clockwise. So clockwise 90 degree, clockwise 180 degree, and clockwise. So I am facing in this direction. 270 degree clockwise. But if somebody says 90 degree anti-clockwise. Now student, 90 degree anti, this is anti-clockwise direction and this is clockwise. That also leads to the same point, same direction. Why? Because sum total is 360 degrees. Sum total is 360 degrees. So students, without wasting your time, let me quickly begin with this basic assignment on directions. I have already
forwarded the 2 assignments to Keshav sir, the one point contact for me, for you, everybody, and he's been very, very supportive and helpful all through. I keep acknowledging his, support at every platform, because it is actually he who is helping us in every possibility. Okay. Now, students, I am giving you the first question on the screen. So all the basics have been discussed. Now, what I'll do is I'll reduce the size and you will see the diagram. In questions of based on directions, we always draw the diagrams. Diagrams become important. Without diagrams, we cannot proceed. So Kn is a point 2.5 meters to the west of A. So A is 2.5 meters to the east of N. Then I've got K as 4 meters the right of A. Right of A is further east. So quickly draw the diagram. So when I go south and then I go north, so P to D, so from D is 6 meters to the south of K. So first, when I move north 6 meters will bring me to D to 3 more. So let me draw the diagram for you, which I have already done on the. All right. I'm just trying to fit both the pages. Can you see both the pages now? N is 2.5 meters to the west of A. K is 4 meters to the right of A. And then 6 meters down south is D. Now, when you move to P, which is 9 meters, don't forget 6 meters will take you to K first, then 3 more meters. So 9 is broken into 6 plus 3. Now, the question here says, if a boy walks straight from N, meets A, goes to K, then D, and then P, how many meters has he walked if he has traveled this straight distance all through? So 2.5 plus 4 plus 6. Now coming back, plus 6 plus 3. So what is the total distance? Are you all getting 21.5, students? These are very simple questions. You just follow the basic instructions and you will get the right answer. Yes, anybody who's having problems here? I don't think you'll have problems here. Let's move to question number 2. In question number 2, students, what we need to understand is, okay, the question says, who is to the southwest of P? Who is to the southwest of P? Now, students, according to me, there are two points which are southwest of P. See, south is D, and so west from K is A and N. West is K, from K is A and N. Now, the question is, who is southwest of P? Now, I got 2 options here very clearly, N and A both. N and A both. But when I look at the options, I don't have N there. It says neither N nor A. Both N and A, yes. If it is not mentioned, I pick up the option which is at least one of the 2. So it is the from within the given options. Is this okay? So the answer for this question shall be A, because there are 2 values which are southwest of P, N and A. I go with A because N is not mentioned in the options. Is this okay, all of you? Yes, sir. All right. That's exactly. So the diagram is done. So next question. Question number 3. I'll again reduce the size, don't worry. Question number 3. A billionaire. A should have gone down, doesn't matter. A billionaire drove his Ferrari towards north, then turned left, drove 10 kilometers. So north में कितना distance travel किया ये नहीं given है. यही पता करना है आपने. This is exactly what you need to work out.
Then he turned left. So please understand, north, say when you take left, you move towards west. You move towards west. So, and then again left and then covered 20. He found himself 10 kilometers west of his starting point. How far did he? So we can still make it a. So let's look at the diagram. So first A to B, he moves north. We don't know the distance. We don't know the distance. This is exactly what is given. We don't know the distance. A to okay. Students, if you look at this, wait. Let me fit this. Yeah. Okay. Billionaire. Fair enough. Maybe I reduce it to 60%. That will make it smooth. Students, these questions are very, yeah. Now, just see, a billionaire is moving north. From A to B, he has moved north. Now, this distance is not known. Then he takes a left, goes 10. Now, 10 and 20 are not proportional in this diagram. That doesn't matter because the distance from A to D and B to C is 10 each. So, distance from A to B has to be equal to C to D. Yes or no? Because it's a rectangle. The movement is along the, I mean, it's 90 degrees. So the billionaire actually drove what distance? A to B is how much? 20 kilometers. You can all see a rectangle here. C to D is 20, so A to B shall be 20 as well. Is this okay, all of you? Ravindra Jadeja left home quickly, because don't forget, we got another topic also to do. Small topics. In case there is a spillover, don't worry. I've kept one buffer class also. 20 kilometers south, then turn right. Please draw the diagram. It's okay. Just quickly do. You do 5 questions, you'll be under control. You'll feel comfortable, fast. And then he reaches his cricket ground. Perfect. How many kilometers will he have to run back to reach his home? Anyone? Fast. Yes, please. Ravindra Jadeja left home. Ravindra Jadeja left home. So 30. Yeah, 30 is absolutely correct. 30 is absolutely correct. Why is 30 absolutely correct? Because see, ground to home, E to D is 20 as in accordance, and D to A is 10. D to A is 10. D to A is 10. Is this okay? Can you see D to A is 10? D to A has been given as 10. D to A is 10. So the length is, the distance from ground to home is 30. 30. Next. Superman began towards the sun at 9 a.m. in the morning. 9 a.m. in the morning is the wrong statement. Redundancy. It's either 9 a.m. or it is 9 o'clock in the morning. It's either 9 o'clock in the morning or 9 a.m. Okay. The question: who started Superman? After flying some distance, turned to right, and then to right. After flying some distance, he again turned to right. And in which direction is he flying? We don't ask you too many things. Just North. ask which direction is he traveling now? Who says north? So Simran. Okay.
No, it's absolutely correct. So first Superman goes in the east, then goes south, then goes west. Now in which direction after D is he moving? He's moving towards north. He's moving towards north. Just read the question. Is this okay? North Agam is absolutely correct. Next question. These are all simple questions. All simple questions. Here, we'll look at the angles 270 degrees anti-clockwise, 45-degree clockwise. Which direction is he facing now? Quickly, very fast. Why I'm wanting you to do fast is because we have to introduce. Southeast. So southeast. Yeah, southeast is absolutely correct. You see, 45 degrees. 270 degrees north, and then so this is 45 degrees. 45 degrees. Southeast is absolutely correct. It's exactly at the center. South east. डायग्राम आपने ठीक बनाना है. डायग्राम ठीक बनाएंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. हरी अप फास्ट. डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, फैमिली ट्री के क्वेश्चंस, कोडिंग डी के कोडिंग के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके टेस्ट में और बहुत कंफर्टेबली आप मैनेज कर पाएंगे. आई डोंट थिंक इट विल बी दैट बिग अ चैलेंज. Yes, please, fast. Southwest. So southwest. Yes, please. So what direction is this? So first goes north, then goes west, then goes south. Now 45 degrees. So what direction? Let me just open the content for you. So about 50 meters. So इसके पहले क्या था? North. One minute. Where are you moving eventually? You are moving in the southwest direction. Is this okay? Just the diagram. Remember, the crux of the story is to draw the diagram correctly. Lalu Yadav began the rally. Okay. From his house, went 150 to north, then covered 100 kilometers west, then south 50, finally east 100. In which direction is he from his house? Yes, please. Is north correct? So what is this point E from L? North. तो साउथ होगा ना. क्वेश्चन क्या था देखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस. अगर ये पूछा जाता कि घर फाइनल पॉइंट से कहाँ है तो साउथ होगा, और अगर पूछा गया कि फाइनल पॉइंट कहाँ है घर से तो फाइनल पॉइंट ई है, घर कहाँ है एल पर है, तो ई एल से किस डायरेक्शन में. हमेशा लास्ट जो वर्डिंग है उसका हमने पूरा ध्यान रखना है. परफेक्ट है, नॉर्थ होगा इसका आंसर. अच्छा, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, ये ऑपोजिट हो जाता है. 6 PM पॉइंटेड नॉर्थवर्ड, 6 इज पॉइंटिंग साउथ, तो 9 PM पॉइंट्स टुवर्ड्स वेस्ट. ऑपोजिट क्या होगा? ईस्ट. आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट. क्वेश्चन नंबर 9. भाई घड़ी उल्टा रखे, क्यों? बिकॉज 6 PM the hour hand is pointing towards north instead of south. North and south are 180 degrees. So what direction will our hand point at 9 PM? Again, students, 180 degree, 9 PM originally is facing west, so 180 degree will take it to east. East. Is that okay? All right. Question number 10. Question number 10 का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा गड़बड़ बना है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 करें, जल्दी, फास्ट. मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए मेंटेन करने के पक्ष में हूँ आज स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एक दूसरा टॉपिक भी टेकअप करना है
और ये सिंपल टॉपिक्स हैं, इसमें आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है. You'll find it very simple. You shall find it easy. I don't think you'll ever find any major complications unless and until you're appearing for banking or SSC or CAT, where the difficulty level will be raised. Normal placement exams, family tree, directions, all this is going to be easy. Sir, north. Sir, option D. नॉर्थ North. होगा, देखिए ईस्ट ऑलमोस्ट नॉर्थ है. यू मैं आपका इसका डायग्राम बनाता. फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, मूव 12. फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 12. तो यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट ऐसे कुछ होगा. 12 कर दिया. अब क्या 90 डिग्री आप कवर कर रहे हैं. 90 डिग्री ऐसे. एक सेकंड. क्या है, then left. अगर हम मैं डायग्राम यहाँ देखूं, सॉरी मैं तो डायग्राम ही गलत बनाया था. मैंने कहा मैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट बना रहा था, तो मैंने 5 बनाया 12 और यहाँ से 90 डिग्री ये 5. तो ये नॉर्थ, ये यहाँ पे Recording in डायग्राम अगर आप progress. देखेंगे जो हम लोगों ने बना रखा है, इसमें ये 90 डिग्री थोड़ा सा बी सी ई के पास आ जाएगा. सी जो है वो ई के पास आएगा. 90 डिग्री मूव करना है, नॉर्थ नहीं मूव करना है. सो सी के पास आ जाएगा, ई के पास आ जाएगा सी. करेक्ट डायग्राम जो है. ई इज नॉर्थ ऑफ ए. ई इज नॉर्थ ऑफ ए. डू यू अग्री? ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. जल्दी, फास्ट, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं. अच्छी बात है, बिकॉज हमने 2 टॉपिक छोटे छोटे कर लेना है. Southeast, sir. साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ. क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं तो उससे आसानी हो जाएगी. क्वेश्चन कह रहा है कि साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ. साउथ ईस्ट हैज बिकम नॉर्थ. मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं बहुत लेजी हूँ. लेजी नहीं, तो दैट इज नॉट गुड. नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट. तो वेस्ट क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे. मैं आपको इसका लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. मोस्ट ऑफ यू गॉट इट करेक्ट. क्वेश्चन ये कहता है साउथ ईस्ट हैज बिकम नॉर्थ. साउथ ईस्ट ये है. मैं 1 मिनट इसका वो बना दूं. दिस इज ईस्ट. Anyway, forgive me for. Okay, west, north, south. Now southeast has become north. तो ये क्या है, ये नॉर्थ बन गया. दिस हैज बिकम नॉर्थ. तो क्या हो रहा है मूवमेंट, ये 45 डिग्रीज है और ये 90 डिग्रीज है. 1.5 मूवमेंट मान लीजिए, छोड़िए एंगल छोड़िए. 1.5 मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज. अब दूसरा देख लेते हैं. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन गया. नॉर्थ ईस्ट ऐसे था, ये वेस्ट बन गया. वाव, ये भी 1.5 मूवमेंट और 1 मूवमेंट. 1.5 मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज. अब क्वेश्चन पूछ रहा है वेस्ट क्या बनेगा. वेस्ट क्या बनेगा. अगेन स्टूडेंट्स, 1 मूवमेंट एंड हाफ मूवमेंट. 1.5 मूवमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज.
क्या बनेगा स्टूडेंट्स? What direction is this? Southeast. Southeast. Are you getting the logic? Are you getting the Yes, logic sir. here? So the answer is southeast. So you need to visualize. That's all. इसमें कोई rocket science नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा और मुझे समझ आ जाता, ऐसा कुछ नहीं है. आपके साथ वही चैलेंज है जो मेरे साथ है, और मेरे साथ जो चैलेंज है वही आपके साथ है. आपको बस डायग्राम बनाना है और इसको विजुअलाइज करना है. दैट्स इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. रैम्बो वॉक जल्दी से करते हैं, फास्ट, क्योंकि आई वांट कि हम 10:20 10:25 तक वी शुड मूव टू फैमिली ट्री. दो टॉपिक करने का वजह यह है स्टूडेंट्स कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कर लेना चाहता हूं अपने 54 आवर्स के. एक 54 आवर्स एक बहुत अच्छा समय है. मैं आपको बताऊं, आई एम इन दिस ट्रेनिंग. हम लोग जब क्रैश कोर्स करते हैं बीबीए लॉ वगैरह के लिए, तो हमारा 72 आवर्स ऑफ टीचिंग प्लस पीरियोडिक एंड असेसमेंट टेस्ट होता है. 72 आवर्स में हम बड़े एट ईज थोड़े से जीके के सेशंस भी कर लेते हैं. आपके केस में 54 है, आप 72 माइनस 54 करेंगे, 18 आवर्स कम है. 18 में से 10-12 घंटे जीके करंट अफेयर्स में जाते हैं, हार्डली 5-6 घंटे की कमी है हमारे पास. तो ये बहुत अप्रोप्रिएट और कॉम्पैक्ट और बहुत अच्छा ये है, क्योंकि आप समय रहते ये कंप्लीट कर पाएंगे. आपको तकलीफ नहीं होगी इस चीज की कि आप ना कर पाएंगे. ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, वेरी क्विकली. देखिए, डायरेक्शंस के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है. रैम्बो वॉक 40 मीटर्स नॉर्थ, किल द टेररिस्ट. टेररिस्ट मारा नहीं मारा, साइलेंटली मूव किया, शोर मचा के मूव किया, ये सब सारी बातें सेकेंडरी. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन. नाइन्टी मीटर्स ईस्ट, 290 मीटर्स ईस्ट है स्टूडेंट. देखिए एफ कहां पर है? ईस्ट. 90 मीटर्स ईस्ट. अगर नॉर्थ नहीं होगा डियर, सिमरन यू गॉट इट करेक्ट. It is 90 meters east, not north. Please look at this. He first goes north, then goes south, then goes north. Now F point F is his final point. Point F is his final point. F. ये F एक से किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स? हाँ, he is moving in the north direction. I agree. अगर आप उसकी बात से कंफ्यूज हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये एफ पर है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट है. अगम, आर यू फॉलोइंग? अगम, आपको बात समझ आ रही मेरी? परफेक्ट. आगे बढ़े जल्दी. इसमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसमें छोटा सा टाइपो एरर हो गया है फाइल बनाते समय, बट उसकी करेक्शन में करा दूंगा. जल्दी से आप इसको ड्रॉ करें. ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको जल्दबाजी नहीं करना चाहता. 13th और 14th क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको आप प्लीज सॉल्व करें. वेरी गुड क्वेश्चन. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम. आई विल हेल्प यू, डोंट वरी. आई शैल हेल्प यू इफ यू. I'm waiting for your final response.
The question is interesting, and it's a little lengthy compared to the previous ones. I'm absolutely okay if you are taking a while to draw the diagram. Salman started walking from point A. All right. Students, the question is how far and in which direction will he from point G? Point G. Okay, मैं क्वेश्चन को शिफ्ट कर रहा हूँ. अब इसको थोड़ा साइज बड़ा कर रहा हूँ. पॉइंट जी से अब ये कहां पर हैं? पॉइंट जी से ये वेस्ट पर हैं, ईस्ट नहीं है. तो आंसर जो होगा 1 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट होगा. यहाँ इन्होंने आंसर ठीक लिखा. इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट सलमान एंड पॉइंट विल बी 1 मीटर फार एंड इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम जी. लेकिन ऑप्शन में इन्होंने ए को चूज कर लिया है. ये आप करेक्शन कर लें. इसका करेक्ट आंसर है बी, बॉम्बे. बी, बॉम्बे. क्वेश्चन पूछा गया जी से ये जो मिड पॉइंट है ये कहाँ होगा? स्टूडेंट्स, sorry, mid G is the midpoint. E to F is 4 meters. F say when it moves 4 meters up. So D to that point is only 4, but D to G is 5. So this point is 1 meters west of G. 1 meters west of G, not east. So the diagram is correct. The statement is correct. Only the last picking up. So make it, hence option B is correct. आप note कर लेंगे इसमें, hence option B is correct. Hence option B is correct. Option B, B for Bombay. Hence option B is correct. B, Bombay. Hence option B is correct, not A. Is this okay? All right, next question. Same question. How far in this direction is point F from point A? Point F point A से कितना दूर है? कौन सा डायरेक्शन है? साउथ. और क्या है डिस्टेंस? 3 और 4, 7. 7 मीटर साउथ. 7 मीटर साउथ. सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम. 7 मीटर साउथ है. कौन? F. क्वेश्चन पूछा गया 7 मीटर. ये 8 नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा. यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट ठीक लिखा गया है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन सी कर दिया गया. देखिए आप स्टेटमेंट में क्या लिखा? 7 मीटर्स एंड साउथ डायरेक्शन. तो 7 मीटर साउथ होगा, 8 नहीं होगा. ये पिकिंग में ऑप्शन ए कर दीजिए. इस दोनों क्वेश्चन में ये करेक्शन है. ये करेक्शन है ऑप्शन ए, नॉट सी, because our diagram and our statement is clearly marked. 7 meters towards south. आगे बढ़े. अच्छे क्वेश्चंस थे. क्वेश्चन नंबर 15. Now question number 15 is different question. It's a different question. जल्दी से सॉल्व करें. Please draw the diagram. Please draw the diagram. Question number 15. Question number 15. Draw the diagram quickly. Very fast. Question number 15. What was the answer in 13? इन्होंने गलत लिखा था, बी होगा.
और इसमें A होगा. Sir, southeast. Okay. I'm waiting for others to respond. I'm waiting for others to respond. तो साउथ ईस्ट होगा. Okay, Southeast. great. So a few of you have got it. Southeast. Question क्या था? Which of the following represents the direction of point G with respect to J? G with respect to J. G is here, J is here. So southeast. Southeast is absolutely correct. Southeast is absolutely correct. All right. The answer to question is southeast. Students, 10:20. I wanted to complete this, so I'll almost complete it in 10:25. Should not be a problem. I think by and large we are on track. I don't want to rush through. That is also not good. Question number 16. Very quickly. Question number 16. जितने जल्दी कर सके. How far and in which direction is point E from point L? Point E from point L. Same diagram. Point E from point L. West. Point E from L. E is west. How much west? 3 meter west. 3. 3 meters. F to G was also 3. Absolutely. 3 meters. Same diagram. So I'm skipping it now. 3 meters west. Question number 17. Easy question. Question number 17. Very easy. Very easy. Students, biggest learning in direction is draw the diagram. That's 3 it. मीटर टुवर्ड ईस्ट होगा ना, ऊपर वाले का बी ऑप्शन होगा ना सर, क्योंकि ई से पॉइंट देखा जा रहा है एल को. क्या क्वेश्चन है देखिए. In which direction is point E from point L? Point E L के कंपैरिजन में कहाँ है? ओके सर. भाषा की बड़ी इंपॉर्टेंस है, महत्वता है मैथ और एलआर में भी. With facing west, turns 45 degree clockwise, then another 180 in the same direction, so 225 or 270 opposite direction. So actually 45 degrees anti-clockwise चले जाइए west से, तो क्या होगा आंसर? साउथ वेस्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाने पे. ठीक है, आंसर है साउथ वेस्ट. डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 18. इजी क्वेश्चन, जल्दी, fast, because we have to start a very important chapter called family tree or blood relations. ये ऐसा चैप्टर है जो इंडियंस को बहुत पसंद है. रिश्तेदार, मेहमान और हमारे यस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फैमिली ट्री और ब्लड रिलेशन. क्वेश्चन नंबर 18. सर बी 100 मीटर. How far did the son meet his father? All right, great, amazing. ये मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करूंगा. पहले आप कुछ 100. 100 meter. जी हाँ, क्योंकि ये 60 है और F to A 80 है, हमें A to E पता करना है. डायग्राम आपका बन गया है, मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ. डायग्राम बनने के बाद हमने पता क्या करना है? We need to find out the distance from A to E. I told you Pythagoras theorem.
So A to F 60 and F to E 80. Why 80? Because total is 100, but B to C. Recording in progress. डायरेक्शंस टॉपिक का एक ही रूल है, डायग्राम बनाना, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, लेफ्ट राइट बिल्कुल फॉलो करें, स्ट्रिक्टली एंगल्स फॉलो करें, ट्रायंगल रेक्टेंगल बनता जाएगा, आगे गाड़ी बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन से मिनिमम 1 मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं किसी भी इम्तिहान में, एक या दो क्वेश्चन यूजुअली रहता है, रेयरेस्ट और रेयर ओकेजन पे नहीं होगा, so you will be able to solve them. The idea is कि 54 hours के मॉड्यूल के बाद you should feel empowered, you should feel confident. और मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, I'm risking being sounding repetitive. Please practice 20-25 questions from these websites, Exam Veda and Smart Kida. Whatever topics, because Tuesday we will have a periodic test where attendance is compulsory. All right. Southeast. Southeast is absolutely correct. What is the question? In which direction is he now from his starting point? Please read the question very carefully. Where is he now from his starting point? F. Where is this? Southeast. All right, students, that brings us to the last question for the day. Very easy question, simple question. Turn to the right at an angle of 45 degrees. 45-degree movement is easy. Yes, please, quickly. Okay, this is the diagram. Question पूछा गया. Yes. Which direction was she moving finally? Finally, she's moving in the southwest direction. Finally, she's moving in the southwest direction. Students, with your support, with your cooperation, we've managed to complete our first topic. दो तीन बातों का ध्यान रखना है फैमिली ट्री चैप्टर में. फैमिली ट्री को वी आल्सो कॉल इट ब्लड रिलेशंस, वन एंड द सेम थिंग. अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट पे इनका अलग अलग नाम है. फैमिली ट्री बाहर के मुल्कों में बड़ा सिंपल है. मासर जी, मौसा जी भी अंकल हैं, मामा जी भी अंकल हैं, ताऊ भी अंकल हैं, चाचा जी भी अंकल हैं. हिंदुस्तान में हमारे अपने भाषाओं में, अपने वर्नाकुलर में, वेदर इट इज हिंदी और उर्दू और फारसी और तमिल और बांग्ला और कश्मीरी और असमीज, वी गॉट डिफरेंट टर्म्स. So family tree as a logical reasoning chapter, we will use by and large English language. However, they are free to use terms like maternal uncle. For example, brother-in-law. Brother-in-law is one word. Brother-in-law का मतलब जीजा जी भी है, brother-in-law का मतलब साला जी भी है, brother-in-law का मतलब साडू भाई भी है, right? But in Hindi or vernacular, you've got different terms. But thankfully, in English, we got common words. Okay. Now, students, whenever you find difficulties, imagine yourself in that position. कई बार questions आएगा pointing to the photograph this person said. So I always, if I find it difficult, कुछ बातों का ध्यान रखना है. If it's a female, I put that person A in a circle. If I say A is the mother of B, then a minus sign is a female. Now this is next generation of B. Now B नहीं बताया गया son है कि daughter है. Please understand. तो आपको gender, आपको इस characters B का sex नहीं पता. You don't know. But if they say A is married to C, then C is obviously a male, so a rectangle with a plus sign. Equal to is for married, and if A has a sibling L, a sister, then one hyphen is for sibling. This is sibling. You can use any symbol. This is for my clarity. Equal to Q, husband and wife are supposed to be equal.
live in an egalitarian society. This is next generation. Plus and minus for male and female. Is this okay? अभी इसके जितने भी क्वेश्चन फैमिली ट्री के आएंगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. लाइक डायरेक्शंस we have to prepare our diagram. We need to prepare our diagram. Students, I'm again repeating this particular chapter is again very simple. It's called family tree, blood relations, whatever you wish to call them. It is one and the same thing. So I'll straight away begin with the question so that we can finish at 11. All right. So let's. Okay. These are interesting questions. These are questions where you are using symbols. Symbol-based questions are fairly common in banking, in SSC, in railways, in most of the government exams. I have seen these kind of questions in math also. Sometimes not very common in a placement test, but other set of questions are likely to be common. So J plus K means J is the son of K, not K is the son. Please maintain the order. What does this mean? A multiplied by B divided by C. So when I say A multiplied by B means A is the brother of B. A is the brother of B. And B divided by C means B is the mother of C. C. Option C, sir. Option C. मामा जी हैं? Yes, sir. Yes. Yes. और यहाँ पर अंकल. आगे बढ़ो. जल्दी फास्ट. ये सारे असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे. इसके अलावा आपने अपने वेबसाइट पे जाके काम करना है. वो वेबसाइट सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट. इससे ज्यादा की जरूरत है. जब भी टाइम मिले एग्जाम वेदर और स्मार्ट वेदर. Sir, A. A, sir. A. C is the father of A. बिल्कुल सही जवाब. C is the father of A. आप समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल है ये सारे क्वेश्चन. ओके. Now we'll solve them. Very interesting. अब आप सॉल्व करें प्लीज. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Sir, F. F and P. Okay, F and P. You want me to draw the diagram, students? अब चाहते हैं कि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं? अच्छा, मैं करता हूं. वरना क्या है कि हमेशा आप पे तो मुझे बहुत भरोसा है, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन लेट मी ऑल्सो F and P. okay. Question says, in a family of 6 persons, F is the grandmother of L. F, grandmother. F क्या है? Grandmother. फीमेल है किसकी? L की. L एक जनरेशन, यहाँ पे भी कोई है. L नहीं बताया है. ग्रैंडसन है, ग्रैंडडॉटर. एंड मदर ऑफ M. मदर ऑफ M. M की मदर है. ठीक. N इज द वाइफ ऑफ M, यानी कि M कौन है? मेल. उनकी वाइफ का नाम क्या है? N. उनकी वाइफ का नाम है N. इसके बाद N is wife of M and mother of Q.
ये मदर भी है किसकी, क्यू, एंड क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। तो क्यू क्या है, फीमेल है, क्यू फीमेल है इसकी, और इसकी ग्रैंड डॉटर है पी की, तो पी हैज टू बी मैरिड टू, आपस में मैरिड है। Now question is, who among the following is a couple? N and F, N and F, no. F and P, F and P, yes. F and P, yes. ये couple है, F and P. P and M, P and M, no. None. ठीक है, तो first answer. Next question पूछ रहा है, which of the following is true? Which of the following is true? पूछ रहा है. L is brother of Q. क्वेश्चन विजिबल नहीं है। क्वेश्चन विजिबल हाँ, तो आप डायग्राम पहले नोट कर ले, मैं व्हाइट बोर्ड पे से वापस आप इसको नोट कर ले, विल गो बैक टू क्वेश्चन, नो वरीज, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, L is the brother of Q. Now L we can't comment, क्यों, L brother है क्या सिस्टर है, L is sister नहीं पता, M has 3 daughters नहीं पता, answer none of these actually, because the gender of L is not known, gender of L is not known, this is very common, so gender अगर नहीं पता है आप नहीं predict कर सकते, ये कोई मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी नहीं है, जैसे वेस्टर्न यूपी चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, आज भी you know, yeah, even Punjab, I'm sorry, you know, these are all pretty fertile land, good farming, good moneyed people, but things are of course changing, of course things are changing, and look at your Olympics, I mean, except for the javelin gold or otherwise, most of the our female athletes, they are doing exceedingly well. So whenever gender is not known, don't assume it to be a male son, it could be son or daughter, anything. Okay, next, same, how many male members are there, cannot be determined. Why? अगर L का जेंडर नहीं पता तो नहीं बता सकते, अगर L मेल हुआ तो मेल की संख्या बढ़ जाएगी, अगर फीमेल हुई L तो 2 हो जाएंगे, सो इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। इज दिस ओके? आपको ये बहुत अलर्ट रहना है, फैमिली ट्री के क्वेश्चंस में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है कि जब भी आपको सिचुएशन फेवरेबल नहीं मिलेगा, you will have to look at clearly, you will have to look at your gender not known, cannot be determined, simple. चलिए next questions करें please. Question number 6, fast. सर आंट नो सर ग्रैंड Yes please, how is Disha related to Rohan? जी बताएं। Yes please. सर ग्रैंड मदर ग्रैंडमदर। Priyanka, Simran, Abhin, everybody is saying So grandmother. of course grandmother. This is the diagram. This is the diagram. Ananya and Arav are siblings. So is Sumit. Because Disha is the mother, Lalit is the father. So actually Disha is the grandmother of Rohansh. Rohansh अनन्या के पुत्र हैं, ठीक है। इसे देखिए, इक्वल टू साइन मीन्स मैरिज,
Perfect. आगे बढ़ें. Interesting questions. How many male players are there? फिर भी आप बनाए तो ठीक. 6 kids are there. 6 kids are there. How many male players are there? How many male players are there? Recording in Daughters progress. are Y और W daughters हो गए. X, Z and V are males. ठीक है? Is this okay? Easy. Easy question. Easy question. Next. इस तरह के questions आपके सर place में अंकल भी तो मेल है ना. जी क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने तो ध्यान से. क्वेश्चन क्या है हुजूर? हाउ मेनी मेल प्लेयर्स आर देयर 6 चिल्ड्रन के बीच. इन 6 बच्चों में ओके सर, ओके सर. हाँ मेल प्लेयर्स कितने हैं? पूरा कॉन्टेक्स्ट ही. ठीक बात. चलिए आगे बढ़े. इस तरह के सिंगल क्वेश्चंस बहुत होते हैं. Daughter. Saying daughter. Who's saying daughter? Is that Abid? No. I don't know. I mean, it's daughter, of course. It is daughter. Why? Daughter. Because it's daughter. Yeah, of course. Daughter. Because only daughter of woman's mother is the woman herself. The girl is Because she is the only daughter. correct. She is the only daughter. Absolutely. Absolutely correct. Next question. Pointing to Raja, Rani said, his mother's brother. Mother's brother means Mamaji. Father of my son, Rajkumar. My God. Raja, Rani, Rajkumar. Interesting. sister, sir. Yes, please. What is the answer? Sister.
sister. Okay. Nephew. Pointing Sir, to how is nephew. Raja related to Rani? Raja is a male. Raja is a Yes, male, sir. sister नहीं हो Nephew, सकती. Sir, nephew. nephew होगा. राजा वैसे भी मेल है. कजन के बेटे. Is that okay? Okay, let's move to the next question, please. These are common questions. Placement test का हो. इसके बाद के questions interesting बनेंगे. जल्दी से करें आप. Yes, please. Pointing to a man, Rohan said, "What man के only brother is the father of my daughter's father." The daughter का father वो खुद है. The father है. His only brother. How is Rohan related to the man? Sir, वो man तो रोहन का uncle हुआ. हाँ तो nephew हो गया. तो nephew. Correct. Correct. Rohan nephew है. That gentleman is brother of Rohan's father. That is uncle. So he is the nephew. ठीक बात. Father के brother uncle हैं और रोहन nephew है. एक दो क्वेश्चंस करके फिर हम थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर बढ़ें. क्वेश्चन नंबर 11. Pointing to an old woman. Pointing to an old woman. Quickly, जल्दी से सॉल्व करें. Son. सॉरी, आपने सन कहा. Yes, sir. How is Aryan related to the who's saying son? Son. Abin, Yes, son. Priyanka, Simran. Simran. Because Aryan is a guy. अरे एक ही of ऑप्शन है सब. course. Of course. एक ही Rest ऑप्शन है. of बिल्कुल all सही. are Because Aryan is a male. Absolutely correct. Next. अब थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गए. ये आपने पूरा डायग्राम बनाना है अच्छे से. I'll draw the diagram, don't worry. आप ट्राई करो पहले. इजी है. डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन. एलआर एक बार आप सारे टॉपिक्स कर लोगे रन थ्रू, आपको किसी तरह की परेशानी ज्यादा नहीं होगी. You will find a lot of comfort on when the companies conduct the tests. Of course, puzzles and arrangements के questions कई बार थोड़े challenging होते हैं, but that's it. Otherwise, if you practice extensively, I don't think there will be a challenge.
आपने ड्रॉ कर लिया डायग्राम? Okay, let me draw the diagram because many of you will be able to solve it. A few of you might not be able to solve it. Okay. क्वेश्चन क्या कह रहा? सीता, राजिंदर and Nephew. Surinder are children of Mr. and Mrs. Modgills. तो हमारे पास Modgills हैं. Modgills के संतानों का नाम क्या है? सीता, दूसरे कैरेक्टर कौन है? राजिंदर, तीसरे कौन है? सुरिंदर. Okay, they're all children of Modgills. Now, next, Raja and Sunil are children of Mr. and Mrs. Bhaskar. So Bhaskars are there. Bhaskars. I'm using different colors so that you'll be able to. I've got Bhaskars and the kids. For the kids, Renu, Raja, Sunil. Sunil and Sita are married. Okay, so Sunil ko yahan rakha. Sunil and Sita are married. Sunil, Renu, and Raja. Okay. Next, Geeta and Rakesh are children of Mr. and Mrs. Jain. So Jains, who are there? It's again different color so that you know who is sibling, who is what. कौन से बच्चों का नाम क्या है? गीता एंड गीता. राकेश. सुरेंद्र जी हैं साथ, तो राकेश को इधर रखा है, गीता को पास है. अभी आगे दिया हुआ है गीता इज मैरिड टू सुरेंद्र. गीता इज मैरिड टू सुरेंद्र तभी. और इनके अशोक संजय हैं इनके बच्चे. इनके अशोक एंड संजय. अशोक, संजय. और इस विवाह से जो बच्चों की उत्पत्ति है वो उनके नाम है. क्या नाम है? 3 चिल्ड्रन. रीता, सोनू, राजू. रीता, सोनू, राजू. आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, पर मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि एक ही फ्रेम में क्वेश्चन नहीं आ पा रहा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ इज राजेंद्र रिलेटेड टू राजू? Nephew. राजेंद्र जी इधर है. uncle. हाउ इज uncle. राजेंद्र अंकल रिलेटेड टू राजू? प्लीज अंडरस्टैंड, राजू यहाँ पर है. राजू के पिताजी के ब्रदर है राजेंद्र, तो क्या कहलाएंगे ये? Uncle. अंकल. अंकल. अगला प्रश्न है, हाउ इज राजेंद्र रिलेटेड टू अशोक? Uncle. हाँ, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया मैटरनल अंकल. अच्छी बात है, क्योंकि मदर के ब्रदर हैं तो मैटरनल अंकल आ जाएगा. ठीक है. और इसके बाद अगला प्रश्न है, हाउ इज राकेश रिलेटेड टू सुरिंदर? राकेश और सुरिंदर ब्रदर इन लॉ होंगे. राकेश और सुरिंदर यहाँ है. Yes, sir.
ब्रदर। Yes, sir. अच्छी बात। और कोई क्वेश्चन है? हाउ इज राकेश रिलेटेड टू रीटा? राकेश, राकेश कौन है रीटा के? Uncle. Uncle. मैटरनल Uncle. अंकल, Uncle. मामा जी, Paternal Paternal. uncle. मैटरनल। सोनू एंड राजू, सुनील एंड राकेश आर रिलेटेड एज सोनू एंड राजू, सुनील एंड राकेश। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, ये इस क्वेश्चन को छोड़ दे क्योंकि ये So it may be Sunil and Raja हो Uncle. सकता है. तो And ठीक है, Sonu and Raju तो ये brother हो कजन, जाएंगे. एक Cousin. ब्रदर इन लॉ है और कजन है, ये आपस में है। एनीवे क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, डायग्राम इस तरह से बन गया। डायग्राम बनाने में तकलीफ नहीं हुई और इन सभी प्रश्नों का हमने समाधान ढूंढ लिया। ये कर लिया आपने सॉल्व, ये सब सॉल्व हो गया है। ओके, नाउ सर फिर Seven- लास्ट क्वेश्चन में अंकल एंड कजिन्स का रिलेशन हो। ठीक है, अंकल एंड कजिन है, बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके, that doesn't matter as long as diagram is correct, it's okay. Okay, next question, 17 to 19. Rama and Mohan are a married couple having Rama and Mohan are a married couple having two daughters named Smita and Devika. Devika is married to, जल्दी से डायग्राम बना लें, हमने टाइम पे मैनेज कर लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ज्यादा रश थ्रू नहीं करना पड़ा है। How is Krishna related to Devika? How is Krishna related to Devika? सर सिस्टर इन लॉ। Krishna is sister-in-law of Devika. Krishna is sister-in-law of Devika. मैं डायग्राम बना देता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो Rama and Mohan are a married couple. Rama is married to और having two daughters. Daughters के नाम क्या है? स्मिता एंड देविका। Smita and Devika. Daughters का मतलब है नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। चलिए, देविका की मैरिज हो रही है कहीं पे। अब दूसरे कपल का क्या नाम है? मधु एंड जीवन। मधु एंड, अच्छा, नाम से आप सीधा मेल फीमेल नहीं लिख सकते, पर यहाँ कपल्स है इसलिए इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, ऑप्शंस में से वी कैन देन गेस, अगर नहीं मेंशन है कांट बी डिटरमिन्ड। फॉर एग्जांपल नवजोत सिद्धू है तो मेल है और नवजोत कौर है तो फीमेल है, राइट। देविका इज मैरिड टू अमन। अरुण। देविका का विवाह है अमन से, और अमन कौन है? सन ऑफ Madhu and Jeevan. एक्सेलेंट। और इनके और कौन है? कृष्णा। Krishna is the daughter. कृष्णा का भी विवाह कहीं हुआ है? नील के साथ। Sunil. क्या बात, सुनील साहब हर है। सुनील पॉजिटिव है, कृष्णा नेगेटिव है, और अनुज और अनुज
दो बेटे हैं, देविका और अमन की एक डॉटर Daughter है, रोमिला। रोमिला है उसका नाम। और क्या कहानी है? बस। यस सर। तो मैरिड कपल कितने हैं? एक कपल है, दो कपल है, तीन कपल है, चार कपल है। चार। चलिए अब क्वेश्चंस के आंसर। कृष्णा कैसे रिलेटेड है देविका से? सिस्टर इन लॉ। What is the relationship between Anuj and Romila? अनुज और रोमिला कैसे, क्या रिश्ता बनता है? cousins. कजिन्स। Cousins. Cousins. Which of the following is true? Anuj is the son of Smita. Anuj is son of Smita. No. False. Romila is a cousin of Krishna. Romila False. is फॉल्स। False. Krishna. Madhu is Sunil's mother-in-law. Yes. ट्रू। ट्रू। बस chapter closed. चलिए आगे बढ़े। सभी प्रश्नों का आपने सही सही समाधान ढूंढ निकाला। That brings us to the last question from this assignment. Mother-in-law. This is the last question. Students, I am pleased to inform you that we did not have to rush and we managed to complete. मेरे को था 1 hour 40 minutes, 1 hour 30 minutes की टीचिंग चाहिए, क्योंकि 5-10 मिनट टाइम आपको काम या क्लास शुरू होने में 5 मिनट्स लगता है, बट ठीक है, I think we will manage just in nick of time. E is son of A, D is son of B, E is married to Brother. C. How is D related to E? Brother-in-law. लॉ। Brother-in-law. डायग्राम बना लीजिए, मैं भी थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, 2-3 बातें जिसका हमें ध्यान रखना है। पहली बात, both what is the similarity between the two topics, directions and family tree? We need to draw the diagram. That's number 1. Number 2, easy questions, need not bother, just go step by step, follow the basic instructions, and whatever basic concepts are required, I think by and large we have covered, we have discussed it in our class. Students, I would humbly request you to practice a few questions from Exam Veda and Smart Reader from both the topics. And in the second half, I will take up another topic from math. Thank you so much. And I guess you got farewell tomorrow. That's what I heard. Great. So be where classes will continue. I mean, either as an adjustment or whatever ways, you'll get all the information. We don't want to play spoil sports. Don't worry. We are there to help. Thank you so much. Keep smiling and keep putting in efforts. All the best. Thank you.